Hello students and welcome to Ekoching. First of all, I would like to thank all the student community for continuous feedback, motivation and to ensure that we come up with a lot of refined content and relevant content as far as management exams are concerned. Now today in this particular video, I'm very much glad to announce that I'm coming up with a brand new lecture series or a video lecture series which is one of its kind, Power with Prashant. Now what is this Power with Prashant all about? Based on my discussion with student community, the very basic concern which we have is verbal ability, reading comprehension, how to tackle. Because there are still some students who are facing challenge as far as reading is concerned. Reading we are still okay, but when they are reading from abstract topics, how to tackle those passages as far as CAT or non-CAT exams are concerned. When it comes to elimination process, what can be that foolproof strategy to ensure that elimination thing can be sorted. The consistency part is still a major concern for many of the students, wherein in some mocks we see a percentile going up to 90, 95, and then there are those mocks wherein you see a percentile of 70, 75. That inclination or that basically that inclination to attend or to attempt the questions is still there when it comes to VARC section, right? So to answer all your queries, all your concern, to develop the logic and to ensure that you can ace VARC, which is verbal ability and reading comprehension with flying colors, I welcome you all to Power of Prashant. In this particular video today, I'll talk about what is this product all about, from when the classes will be launched, and it is not just video lecture, it is not just live lecture, it is not just practice test, but it is a combination of all these things right from the basics till advanced, completing VARC, not just the questions, but just ensuring that how you can apply the logic. When we talk about verbal ability and reading comprehension, the first thing जो मैं बहुत clearly students को बोलता हूँ, keep or reserve your brain for LRDI and quants. Yes, verbal के अंदर CAT के अंदर पहला section verbal ability. Don't use your brain here. Keep it simple with Power with Prashant. एंड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पास ये छोटी सी जो चीज है इसको आप रिजर्व कर सकते हैं LRDI और क्वांट्स के लिए. सो फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 minutes प्लीज डू लिसन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई एम टेलिंग यू, आपके जो मेजर क्वेरीज कंसर्न है वो सॉल्व हो सकते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज के साथ जिसका नाम है पावर विद प्रशांत. एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज इज बेसिकली माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 10 years as far as verbal ability is concerned, how to tackle the passages, how to tackle those questions, how to take care of those inferential questions. Are these parajumbles really a cause of worry or a point of worry? So to tackle or to answer all these questions, please do listen to this video. And अगर आपको लगता है that yes, this is the one you are looking forward for, you can just get in touch with us at any given point of time in the details given below. So let's start Power with Prashant. What is this product all about? Over to you, right? So when we talk about this particular course, right? So this is a small PDF which I will be sharing to all the students when you start this particular lecture series or when you enroll for this particular program, right? This will be given to you. This will be handy to track or to take care of your progress as well, right? So the first thing is my basic reason to launch this particular course was. The first thing was consistency in scores with your VARC section in CAT. आपका मेजर कंसर्न ये है, सर हमारा कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज आई वी नीड सम हेल्प ऑन दैट. सो दैट्स माय पॉइंट नंबर 1. सो इन दिस particular lecture series we will talk about consistency. The second thing is selecting the right RC. Forget about selecting the mock. Yes, selecting the right options.
forget about selecting the right option. The first thing is selecting the right RCs, right? How to take care of that? Eliminating option अभी तक भी कंसर्न बना हुआ है, वो मेरे दो ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज होना is still a big problem for me. Want to practice to boost your percentile, and I want to practice more. I want to practice some relevant sets. I want to read some relevant stuff as well, because मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है, देखो CAT has evolved over the years. If I talk about verbal ability, CAT evolved हुआ है throughout the years. It's very necessary, हमें भी evolved होना पड़ेगा, right? So we'll talk about that as well. So about this course, as I said, इस मॉड्यूल के अंदर I'll talk about it. आपको बेसिक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, राइट? आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए हेल्प मिलेगा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे. ऑल दिस थिंग्स विल बी टेकन केयर इन दिस पर्टिकुलर lecture series, right? So by the way, knowing about the faculty, my name is Prashant Sugandh, right? And many of you might be knowing me. So last 10 years I am training students for all these competitive examinations, specifically management examination, right? And this experience I just want to share with all the students, that what can be taken care of, how you need to take care of all these things. So that's about me, and I based on my personal interest towards counseling, I do counsel students for various programs, and I'm a PDP trainer as well. I train students for group discussion, person interview, and all those things, right? So this is about me, this is about Prashant. Let's go further, थोड़ा सा आगे चलते हैं. So the first thing, very important, अब मैं इसके अंदर कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा और देखिएगा, और आप खुद कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा क्या ये चीज आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, या क्या इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होता है. एंड आई एम टेलिंग यू, चाहे आप अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, या आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, या आप वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, या फिर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, ये सब के लिए रेलिवेंट कोर्स कंटेंट है. सो प्लीज डू एंश्योर, डू रीड व्हाटएवर आई एम टॉकिंग अबाउट. और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, कमेंट सेक्शन के अंदर आपके फीडबैक जानना चाहूंगा कि क्या ये कोर्स आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं, राइट? So, as I said, the course will commence from 29th of August. Yes, 29 अगस्त को ये कोर्स लॉन्च हो रहा है फॉर्मली. बाय द वे, अगर आपको इसके कुछ वीडियोस, इसके अंदर कुछ लाइव लेक्चर्स, कुछ सैंपल लेक्चर्स देखने की इच्छा है, तो you can join us from tomorrow onwards. When I'm saying tomorrow, I am talking about 20th of अगस्त. आप 20 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पर हम लोग बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में, राइट? 29 से फॉर्मल लॉन्च हो रहा है. एंड एज आई सेड, विल स्टार्ट विद नो योर एनिमी, एंड योर एनिमी इज कैट. नो योर एनिमी, अपने एनिमी को जानो तो सही डिटेल के अंदर. और इस एनिमी को हम लोग इसके जेनाइसिस से इसके ऊपर बात करेंगे. जब से एनिमी पैदा हुआ है, तब से इसने किसकी क्या क्या रूप लिए हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. देन मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर लगता है, जो मैं बात करूंगा, अगर आप देखेंगे यहां पर. सो इफ यू सी माय मेजर दिस थिंग, सो राइट, माय फर्स्ट थिंग अगर आप यहां देखेंगे, सो हियर by 20 lectures specifically focusing about what my comprehension. और उसके अंदर मैं सिर्फ sets solve नहीं कराऊंगा. My every lecture, if you see here, so as I said, I have talked about, I have mentioned about, overcoming the reading challenges, right? There are challenges I have seen students जब रीड कर रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, जैसे हम नॉवल पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं. इट्स नॉट नॉवल और बुक. यहां पर पैसेजेस को बहुत अलग तरीके से अटैक करना पड़ेगा, राइट? Follow basic driving rules while reading. What are those driving rules? Anticipating questions. To be very honest with you, आप जब पैसेज पढ़ रहे हैं, at least while preparing, जब मैं आपको साथ यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के अंदर आऊंगा, right? I will train you that how to anticipate questions. मेरे किस लाइन पर किस तरीके से questions बन सकते हैं. We will talk about that as well, right? Options, they don't help you, they confuse you. Options सिर्फ आपको confuse करने के लिए दिया जाता है. And I'm telling you, अगर आप एक डिसेंट एस्पिरेंट है, अगर आपने ठीक ठाक से मेहनत करी है, आप आराम से पैसेज को समझ सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं. बट ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए होते हैं, राइट? देन आई विल आल्सो टॉक अबाउट एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, वेयर आई यूज power, right? So what is this power all about? I'll talk about this in those videos. So power with Prashant, how to eliminate the options. These are the elimination techniques which I'll be talking about. Tone questions, a misnomer for tagging them as difficult. Yes, it's misnomer saying that they are very difficult. To be honest with you, if you know the logic, then I don't think that tone questions can go wrong, right? Then we'll talk about
is there any difference between a main idea, theme, conclusion, tone? What difference, and how I need to find them? Where should I go? Right? So that's what I'll be talking about. Art of leading questions. As I said, this is an art. अगर आपको क्वेश्चंस छोड़ने हैं वो भी एक आर्ट है. एंड देन if you see here, अगर आप यहां देखेंगे, my majority concern is basically to train you for comprehension. Why? Because मेरा 80%, my 80% is reading comprehension. Then why not giving that time to that particular module if that is something is a decision maker or my gateway to the top colleges of the country, right? So this is what I'll be doing it. And then, as I said, we'll go to verbal ability as well. Is para jumble in 2.5 minutes. What is this 2.5 minutes all about? I'll talk about this in my lectures to come, right? So this is what I'll be talking about. थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग और हम क्या बात करेंगे. So ये आपका पूरा मॉड्यूल जो है 29 से शुरू होके अगर आप यहां देखेंगे, by 24th we will be completing the whole module. We'll be completing the whole module of CAT because 27th को आपका CAT आएगा. और अगेन आपको शायद कंसर्न होगा, सर अभी मैं कैसे शुरू करूं. टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप अगर कहीं पर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके लिए भी रेलिवेंट हो सकता है. अगर आपका वर्बल एबिलिटी स्टिल एक कंसर्न एरिया बना हुआ है, आपने शायद अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, वर्बल एबिलिटी में कंसर्न है, ये भी आपका एक रेलिवेंट आपके लिए चैनल हो सकता है. या फिर अगर आपको लगता है, लेट्स से आई हैव अपीयर्ड फॉर कैट लास्ट ईयर और लेट्स से लास्ट टू लास्ट ईयर एंड स्टिल लेट्स से देयर इज अ स्ट्रगल एरिया वर्बल के अंदर, आई एम स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, दिस प्रोडक्ट कैन बी यूजफुल फॉर यू एज वेल. सो इन ऑल द सेंसेस आपको यहां पर बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ कवर होगा यहां पर, राइट? सो बाय 24th November we'll be completing it, and then after that we'll be talking about non-CAT exams as well, that what is the journey of non-CAT examination, vocabulary, verbal logic, all these things, how they are different from CAT. Are they really different, right? So we'll talk about that as well. इसके अलावा सो दीज वर ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स जहां बेसिक से बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में, एंड बहुत ही बेसिक से, और बेसिकली टू ट्रेन यू दैट इफ लेट्स से कैट अगर आपको पैसेज बनाने के लिए दे दे तो आपको भी वो पैसेज क्वेश्चन बनाना, एंटिसिपेट करना, वो सब आना चाहिए. और आई ऑल्सो टॉक अबाउट, क्योंकि हर पैसेज कुछ कहता है, राइट? आई टॉक अबाउट दोस इन्फ्लुएंशियल पैसेजेस एज वेल, राइट? Then we'll talk about live sessions and past year question paper. Sorry for this. So last इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे when we talk about live sessions and past year question paper. Now what exactly this thing is all about? So what I have done is, right, मैं इसके अंदर क्या कर, oops, very sorry, just a minute. Okay. So इसके अंदर what I'll do is, so then I'll talk about live sessions and past year question paper. Now, what I will do in this particular module is, so once you are done with the basic sessions of basic recorded sessions, I'll come live, right? I'll talk about these two things specifically. So, for example, I'll start with my sessions from 8th of September coming live. So, how to read, keywords, vocabulary, link and structure. तो ये वीडियो जो मैंने आपको दिया होगा, मैं इसको अप्लाई करूंगा actual CAT passages के अंदर, and we will try to see if it makes sense based on whatever recorded lectures you have gone through, and उसको आप अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. एंड मेरी इस सेशंस के अंदर एक चीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये 8 सितंबर के सेशन को सुनने से पहले अगर आपने बेसिक वीडियो लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, 8 सितंबर में मजा नहीं आएगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू शुड skip attending that lecture as well. अगर आप इस मॉड्यूल को ले रहे हो, I can assure you that you can jump your percentile and at least remain consistent with whatever you are doing. वो स्कोर फ्लक्चुएट होना बंद कर देगा, वो डर खत्म हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा. These are the 3 things which I can assure you. As I said, consistency, as I can say, confidence, and that phobia which you have. आई एम टेलिंग यू, ये 3 चीजों में हम अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, बट इसके लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छी तरीके से सुन के आना पड़ेगा, तभी ये रेलिवेंट होगा. थोड़ा सा आगे चलते हैं. सेड, क्योंकि हर पैसेज कुछ कहता है, जो मेरा वीडियो लेक्चर रहेगा, विल टॉक अबाउट इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चंस इन कैट एग्जामिनेशन, एंड आई एम टेलिंग यू, आप उसको अच्छी तरीके से करेंगे, मैं नहीं, ठीक है? सो उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक की. सो ये जो भी चीजें हम रिकॉर्डिंग के अंदर करेंगे, उसके लिए हम बेसिक, तो जैसे देखिए मेरा 21 अक्टूबर का सेशन, रिजर्व योर ब्रेन फॉर एलआरडीए एंड क्यूए, जस्ट अप्लाई पावर एलिमिनेशन. रख दो संभाल के यार, एलआरडीए और क्यूए में बहुत जरूरत पड़ने वाली है. वर्बल को हम सिंपल रखेंगे, बट परसेंटाइल लेके आने वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली लाइव सेशंस, और यहां पर मैं पास्ट ईयर
पेपर्स के ऊपर सबसे ज्यादा बात करूंगा। टिपिकली 27 नवंबर तक हम बात करेंगे कैट के पैसेजेस को लेके, राइट, एंड आई आल्सो सी इफ आई कैन टेक सम ऑफ द जेड पैसेजेस एज वेल। सो दिस इज व्हाट आई विल बी डूइंग इन लाइव एंड प्लस पास्ट ईयर पेपर एज वेल। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग और किस किस चीजों पे बात करेंगे। नाउ द थर्ड मॉड्यूल, मैंने पहला मॉड्यूल बात किया रिकॉर्डेड के ऊपर, फिर मैंने बात किया मेरे लाइव लेक्चर, और यही नहीं, आपको इसके अंदर टेस्ट लेवल भी मिलेगा। और ये टेस्ट आई हैव डिजाइन कीपिंग इन माइंड what you have done in recorded lectures, what you have done in live lectures, because देखो जनरली आपको जब टेस्ट दिया जाता है कहीं पर भी, राइट, वो टेस्ट बेसिकली आपके हिसाब से तो नहीं चलता, बट दिस टेस्ट ये लॉक होगा आपकी पढ़ाई के हिसाब से, बिकॉज अब आपको पता है मैं क्या रेलिवेंट कंटेंट रीड कर रहा हूं, और उसके हिसाब से मैंने आपके लिए वो टेस्ट क्यूरेट कर रखा है, सो दैट आप वो लॉजिक अप्लाई कर पाए। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये आपके टेस्ट मिलेंगे, आपको आरसी के इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल मिलेंगे, सेक्शन टेस्ट मिलेंगे ऑन कैट एंड नॉन कैट एग्जामिनेशन एज वेल। सो देयर आर 18 टेस्ट ये आपको मिलेंगे, राइट, स्पेसिफिकली as far as this test content is concerned। और उससे पहले जो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात कर रहा था, I'll show you that as well। अगर मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात करूंगा, सो टोटल यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स 34 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एंड उसके बाद अगर हम लाइव लेक्चर्स की बात करें, यू विल गेट 13 लाइव लेक्चर एज वेल। सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर पावर विद प्रशांत मॉड्यूल, राइट। एंड देन कंसर्न आता है सर डाउट कैसे सॉल्व होंगे। देयर विल बी डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल वेयर इन मी and my faculties will be available to clear your doubts for sure, right? So as you can see here, a dedicated Telegram group only meant for enrolled students, not for anyone else. You can post your doubt there. There will be 2 moderator faculty and plus me, and we will make sure that within 48 hours, don't expect it on the spot. Within 48 hours, we'll make sure that we will clear your doubts as well. That's what we'll be doing in Power of Prashant, right? So ये आपका Telegram group के अंदर मिलेगा. So there are few testimonials here. I'll share this PDF with you guys. You can just go through the testimonials as well. And आप देख सकते हैं what is this testimonial and everything is all about, right? And then there are certain FAQs which are there, how you can download the videos, can I do that or I can't do that, how to, go to this course, how to subscribe, how to purchase. So all these things is mentioned here in this particular thing, right? So with this, I want to end this particular video and I'm telling you, अगर आप ace करना चाहते हैं verbal ability and reading comprehension, if you want to ace this particular section, if you think that yes, this can be my roadblock for entering into the top colleges including IIMs, then this is the course which you should go for, which you should enroll for, and I just wish to see you guys there, right? So that's it from my side, guys. Thank you, stay tuned and keep watching Ekoching. See you on 29th. Thank you.